Thank you very much once again, everyone, for joining the channel Yoga with THV, and do subscribe the channel so that you may learn the new topics as well, because we have already discussed different topics over here like child development and introduction to clinical psychology and psychotherapy, social psychology, positive psychology, and there are different other topic as well. So today we are going to discuss about the behavioral techniques, the behavioral modifications, how we can modify the behaviors and what are the types of it. तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली किस तरह से हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट विद इट. वो डिस्क्रिप्शन में मैंने, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो जो साइकोथेरेपी क्या है उस हवाले से वो उसमें डिस्कस किया गया, और दिस इज़ द सेकंड पार्ट जिसमें टेक्निक्स पे हम लोग बात करेंगे बिहेवियरिज्म के हवाले से और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस के हवाले से, और उसके अलावा कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे. आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बिहेवियरल टेक्निक के हवाले से बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि बिहेवियरिज्म जो है वो है क्या, यानी बिहेवियरल टेक्निक. तो इस जो बेस्ड करता है ये डिफरेंट थिंकर्स, जिसमें वॉटसन, पावलोव एंड स्किनर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और इनका मानना ये है था, स्पेशली 1950s में ये बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ, और इनका मानना ये था कि जो बिहेवियरिज्म एक्चुअली जो बिहेवियर्स हमारे हैं वो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक्चुअली कॉज करता है, रादर देन इंटरनल जो हमारी फोर्सेस हैं. क्योंकि इससे पहले जो बात हो रही थी वो साइको एनालिटिक के हवाले से बात हो रही थी कि जितनी भी चीज़ें हमारे माजी से या हमारी सोच से या इस तरह से, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जो हम लोग अपना बिहेवियर जो है वो लर्न करते हैं, अपनी आदत जो सीखते हैं, वो एक्चुअली हम लोग अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं, और उसी से हम लोग उनको चेंज भी कर सकते हैं. वो कैसे? यहाँ पे जो बिहेवियरल थेरेपी है इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिससे बिहेवियर, जितने भी मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं या डिसफंक्शनल बिहेवियर्स होते हैं, उनको एक्चुअली चेंज किया जाता है पॉजिटिविटी के साथ. जो मेन गोल है बिहेवियरल टेक्निक्स का या थेरेपीज का वो ये है कि ये रीइंफोर्स डिज़ायरेबल बिहेवियर्स को किया जाता है पॉजिटिविटी के साथ, जिसकी वजह से जो अनवांटेड बिहेवियर्स या अनवांटेड हमारी जो जितने भी हमारी आदत हैं जो शख्सियत का हिस्सा बन चुकी होती है उनको एलिमिनेट करता है या उनमें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है. जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि द बिहेवियर इटसेल्फ द प्रॉब्लम. गोल जो उसका है टू टीच पीपल न्यू बिहेवियर्स टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द इशू. ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस हमारे वही रहते हैं, लेकिन हम लोग डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाती है जिससे वो पॉजिटिविटी की तरफ उन्हीं सारी अपने सर्कमस्टांसेस को, उन्हीं सारे इन्वायरमेंट्स को, उसी सारी सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ कैसे डील किया जाता है ये सिखाया जाता है. तो यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निक्स को करते हैं जो इसकी बहुत पॉपुलर टेक्निक्स हैं, उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली टेक्निक है, तीन तरह से एक्चुअली हम लोग इसको जानेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से, ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से, एंड मॉडलिंग या सोशल लर्निंग. किस तरह से हमारे जो बिहेवियर है वो लर्न होते हैं और किस तरह से हम लोग इनको एलिमिनेट या कंट्रोल कर सकते हैं. इसी के ऊपर एक और वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंशनड है, जिसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो कैसे हम लोग लर्न करते हैं अपने बिहेवियर्स को थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट या फिर मॉडलिंग के, वो भी आप लोग देख सकते हो. उससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली किस तरह से हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बिहेवियर को शेप करते हैं एक्चुअली. अभी हम लोग जो बात करेंगे जिन टेक्निक्स की, वो क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से है कि किस तरह से बिहेवियर लर्न होते हैं और किस तरह से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के हवाले से बात करेंगे. ये एक बड़ी शानदार टेक्निक है
जिसके ज़रिए हम लोग जो स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है जितने भी फोबियाज़ या फियर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो उसको उसके लिए एक बाकायदा एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज करवाया जाता है क्लाइंट को। जब क्लाइंट क्लिनिक में आता है तो उसके ऊपर 3 तरह से काम किया जाता है। सबसे पहले तो उसको रिलैक्सेशन एंड मसल रिलैक्सेशन एंड डीप ब्रीदिंग जो है वो टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, और जब तक वो इसको पूरी तरह से नहीं सीखता नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जाया जाता। तो फर्स्ट स्टेप में उसके जो मसल्स हैं जिस्म के जितने उसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब हम लोग अनवांटेड जब सिचुएशंस में आते हैं, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आते हैं, तो हमारे जो नर्व्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले मसल रिलैक्सेशन करवाई जाती है ताकि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो वो उसको सबसे पहले जो ख्याल खौफ की बजाय मसल रिलैक्सेशन का, डीप ब्रीदिंग का उसको पैटर्न सिखाए जाते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में इसकी एक जितनी भी उसकी एंजाइटीज़ हैं उसकी हायरार्की सेट की जाती है कि उसी से पूछा जाता है उसको अगर किसी भी तरह का खौफ है, जिस तरह से कोई फियर है या फोबिया है स्पाइडर का और लिजर्ड का, स्नेक का, क्लस्ट्रोफोबिया है उसको, एगोरोफोबिया है, या किसी भी तरह का उसको बंद जगह का, तंग जगह का, या ऊंचाई का, गहराई का, या पानी का, आग का, किसी भी हवाले से उसको कोई फोबिया है, तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि पहले नंबर पे सबसे कम जो उसका खौफ है वो लिखवाया जाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे उससे ज़्यादा, थर्ड नंबर पे उससे ज़्यादा, और फिर 10 एटलीस्ट जो है वो उसकी स्टेटमेंट लिखवाई जाती है, और हर एक पे उसको रेट करवाया जाता है कि 0 से 10 तक कहाँ पे एक्चुअली उसको ये खौफ जो है उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। ये करवाने के बाद फिर थर्ड स्टेप किया जाता है कि इसकी पेयरिंग करवाई जाती है। अब पेयरिंग किस तरह से करवाई जाती है कि जो सबसे पहली स्टेटमेंट उसने लिखी होती है, जो लीस्ट में होती है, जो कम कम उसको उसके लिए स्ट्रेस का बायस बनता है, वो इमेजिन करवाई जाती है। और इमेजिन करवाने के बाद, इमेजिनरी में ले जाने के बाद उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है, रिलैक्स करवाया जाता है। जब वो उस पर पूरी तरह से काबू पा लेता है तो फिर सेकंड जो उसका स्टेप है, जो सेकंड उसके लिए डिस्ट्रेसफुल होता है, वो इमेजिन करवाया जाता है और फिर रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है। और इस तरह से 1 बाय 1 10 स्टेप या 15 स्टेप जो भी उसने बताए हैं उसके ऊपर पूरी तरह से काबू थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक एंड डीप ब्रीदिंग करवाया जाता है। और जब उसके वो 10 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं इमेजिनेशन में, फिर उसका एक्सपोजर करवाया जाता है रियल स्टिमुलस के साथ जिससे भी उसको प्रॉब्लम होता है। और जब वो उस पर वो पूरी तरह से मास्टर्ड हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ वापस आ जाता है। Gail has a disruptive spider phobia. She has decided to undergo behavior therapy, systematic desensitization, to reduce her anxiety. The process involves 3 steps. First, she must learn to relax by practicing progressive muscle relaxation as directed by her therapist. Gail tenses and relaxes muscle groups starting at her toes and working towards her head. She does these 15 minutes a day for several weeks until she learns how to put herself in a relaxed state. In the second step, with the help of a therapist, Gail lists feared situations involving spiders and ranks them in a hierarchy from the least stressful to the most stressful. From visualize a toy spider and visualize a spider on a web, to actual view a spider from a distance or hold a spider in her hand. Now Gail is ready for step 3, exposure. First, she puts herself into a relaxed state and imagines the least stressful item in her list. She tries to remain in a relaxed state while vividly imagining the toy spider. She repeats this until he feels no anxiety. Then, she goes on to the next item in her hierarchy, repeating the relaxation procedure. Visualize a spider on a web. Visualize a spider on the ceiling. Visualize holding a spider. View a spider in an aquarium. View a spider from a distance. Hold a spider in my hand. Behavior therapy takes a more direct approach to treatment than other therapies and therefore requires less time.
An entire systematic desensitization treatment may require only 5 to 30 sessions. राइट तो उसमें हम लोगों ने अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये होगी फ्लोटिंग के हवाले से. दिस इज द सेकंड टेक्निक ऑफ बिहेवियरल टेक्निक. अब इस ये एक पूरा प्रोसेस है एक्चुअली. इसमें भी सबसे पहले क्या करवाया जाता है कि उसको सिखाया जाता है पेशेंट को, क्लाइंट को सेल्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसमें भी सिखाई जाती है फर्स्ट. और फिर उसके बाद इसको एक्सपोज करवाया जाता है एब्रप्टली एंड डायरेक्टली टू द फियर इवोकिंग स्टिमुलस इटसेल्फ. तो जिस भी चीज़ का, जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी प्लेस का या जिस भी इन्वायरमेंट का सर उसको फियर होता है, उसको एकदम से वहाँ पे उस सिचुएशन में लेके जाया जाता है. यहाँ पे क्या है कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक्चुअली उसको सिखाई जाती है और फिर उस क्लाइंट को एसोसिएट करवाया जाता है फियर के साथ विद द स्टिमुलस, जिस भी स्टिमुलस से वो घबरा रहा होता है या जिससे उसको फियर होता है, लेकिन फ्लोटिंग की तकनीक से. और इसमें जो फियर रिस्पॉन्सेज हैं रिप्लेस करवाए जाते हैं रिलैक्सेशन के साथ. लेकिन ये एक्चुअली फोबिया को एलिमिनेट करने का एक तरीका है. लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि अब जो हमारा क्लाइंट है पहले उसकी मेडिकल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन को सामने रखते हुए, अगर ऐसा क्लाइंट जिसको कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है या उसको कोई एपिलेप्सी हो सकती है या कोई भी ऐसा फिजिकल सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है. इसलिए सबसे पहले उसको रिलैक्सेशन सिखाई जाती है, लेकिन इसमें एकदम से फौरन से उसको उस सिचुएशन में लेके जाया जाता है या उस स्टिमुलस से जिससे उसको खौफ महसूस होता है उसका सामना करवाया जाता है. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एकदम से वो खौफ जो है उसके जहन से निकल जाता है क्योंकि वो समझता है कि ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल था जिसको मैं सिर्फ एक खौफ तारी किया हुआ था मैंने इसके ऊपर. तो फ्लोटिंग की टेक्निक एक्चुअली इस तरह से अप्लाई की जाती है. इसको एक दफ़ा देखते हैं हम लोग मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए. Oh my god. No, I can't handle this. Megan, what was your anxiety level during that trial? Like a 10? Oh my god, that was crazy. Ugh, I hate these things. They're so funky. Look at this giraffe. Megan, what was your anxiety level that time? Like a 4. They're not that bad, but they're just so squeaky and freaky. I just don't like them. Megan, what's your anxiety level after the third trial? 0. I love them. Right. So here we'll be discussing about the third
technique, third therapy, and that is aversion therapy. अब एवर्जन टेक्निक में एक्चुअली क्या होता है कि एवर्जन जैसे कि लफ्ज़ से ही मतलब है कि इसमें हकारत या नफ़रत या फिर जिससे किसी को कोई लफ्ज़ को सुनते ही या उस चीज़ का सामना आते ही उसको अजीब सी कैफियत का पैदा होना। तो ये एक्चुअली ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेयरिंग की जाती है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर की और with an aversive stimulus in the hope that the unwanted behavior will eventually be reduced। तो इसमें क्या करवाया जाता है कि आपका जो डिज़ायर है ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है जो ड्रग एडिक्ट या सब्सटेंस अब्यूज़ उस हवाले से, या गेमिंग जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके एडिक्ट हो जाते हैं, या गैम्बलिंग जो है जुआ है उसको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं, या ईटिंग जो हैबिट्स हैं वो एक्सेसिवली ओबेसिटी की तरफ जो चले जाती हैं उस हवाले से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इस तरह के प्रोसेस में होता है कि आपका जो डिज़ायरेबल जो आप चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, तो उसके साथ एक अनडिज़ायरेबल जो स्टिमुलस या एवर्सिव जो स्टिमुलस है उसको साथ अटैच कर दिया जाता है, पेयर कर दिया जाता है कि उसके साथ उसको कुछ मतली आना शुरू हो जाती है या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो अनकंट्रोलेबल होती है। एक्चुअली उसका ये बिहेवियर लर्न करवाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसको वही वाला ख्याल आना शुरू हो जाता है उसकी, और वो सोचता है कि मैं अगर स्मोक करूँगा या मैं अल्कोहल यूज़ करूँगा या मैं गेमिंग खेलूँगा या मैं सेक्शुअल अब्यूज़ करूँगा या मैं कोई भी ऐसा जो अनवांटेड बिहेवियर है जो सोशली या नॉर्मली जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जो ही उसके जहन में आएगा तो साथ ही वो वाला उसके जहन में ख्याल भी आएगा कि मेरे साथ दोबारा से मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगी अगर मैंने इसको यूज़ किया। तो इस तरह से इसकी पेयरिंग करवाई जाती है, यानी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के साथ एक एवर्सिव जो स्टिमुलस है उसको ऐड कर दिया जाता है ताकि उसका जो बिहेवियर है अनवांटेड जो सोशली या नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं उससे किसी तरीके से उसको बाहर निकाला जा सके। इसको समझते हैं एक छोटे से क्लिप से। Brandon is 18, small for his age, profoundly retarded, with a history of seizures. Nearly 24 hours a day, he wears 5 electrodes on his body and always has a therapist at his side, ready with remote controls to give him skin shocks if gentler ways of stopping his self-abuse fail. By age 13, Brandon had bitten off part of his tongue, chewed his inner cheeks, and dropped to 52 pounds. In a desperate attempt to save him, psychologists at the Behavior Research Institute in Rhode Island used the only device then available to give him more than 5,000 mild electric pulses in one day. It had no effect. So BRI developed its own shocker, strong enough to grab anyone's attention. The burning sensation is brief and felt only in one spot, leaving no permanent mark or injury. Within 5 weeks after Brandon first received the stronger shocks, he gained about 20 pounds. If this treatment were taken away, I don't think I could keep Brandon alive. Matthew Israel's aversive therapy methods have been challenged before. Now, officials in Massachusetts, where students are bused to group homes, want to decertify the program, effectively ending the skin shock therapy. It can never be justified to abuse another person like this, no matter what the situation is. Parents of students at the Institute resent such comments. Nobody really knows what it's like unless they've lived it. Susan Phelan lived it for 17 years with her son Terry, retarded with cerebral palsy. He beat his head to the point of losing sight in his right eye and went partially blind in the left. After he came to BRI 3 years ago, skin shock stopped the self-abuse long enough for doctors to discover and treat his chronic ear infections. My son is very happy here. I feel safe because he is watched 24 hours a day. I don't feel it's invading any of his rights to privacy. Phyllis and James Shields also approve of skin shocks. It's quick and it's over with and it's effective. It's much better than having a helmet on your, that's more inhumane. The Shields' son, Michael, used to wear a helmet for weeks on end.
Now, at age 30, wearing the shock devices, he earns money assembling jewelry. His classmates include Wayne, who used to eat corkboard, cram his mouth with food, and commit other acts of self-abuse too gruesome to describe. On this day, Wayne's supervisor hadn't given him a shock, but said she would if warranted under strict guidelines. The consequences are so less severe than the damage that they can do to themselves without this. 2 students capable of conversing told us the skin shocks have helped. I'm not acting out like I did before. Bad boy, think I stop. Be good. Stop no more. Matthew Israel says his program gives students far more rewards than punishments and discontinues shocks when possible. He believes many other programs use aversive methods, but under politically correct terms. I couldn't live with myself, I suppose, if I played those games. So he's going back to court to fight for a treatment he's convinced gave new life to patients no one else could help. Brian Jenkins, CNN, Providence, Rhode Island. राइट अभी जो हम लोग बात करेंगे वो टेक्निक्स जो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड करती हैं उस हवाले से हम बात करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर रीइंफोर्समेंट की बात होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए जब हम अपनी कोई आदत सीखते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, तो वो किस तरह से। इसमें जो सबसे पहली टेक्निक है दैट इज़ अ कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट। अब ये अप्रोच एक ऐसी होती है जिसमें एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट या फिर पेरेंट या टीचर के हवाले से भी, जिसमें बिहेवियर को आउटलाइन किया जाता है और फिर बताया जाता है कि ये बिहेवियर में प्रॉब्लम है, ये आदत आपने गलत सीख ली है, इसको किस तरह से हम ठीक करेंगे, और उसके लिए उसके गोल्स हैं वो भी साथ लिखे जाते हैं। फिर रीइंफोर्समेंट्स जो दी जाएंगी, जो रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जो पेनल्टीज दी जाएंगी क्लाइंट को, वो भी सारा कुछ उसमें मेंशन किया जाता है ताकि क्लाइंट को अंडरस्टैंड हो कि मैंने कैसे कैसे अपने बिहेवियर को पॉजिटिवली मॉडिफाई करना है। कैसे, इसको एक दफ़ा देखते हैं। So we're going to start today by having you do a UA. Okay. So if you don't mind, we'll just have you take this and Okay. stand up and just head out that way. Okay. I can do that. Great. All right. Great, Paul. Thank you so much. So we are going to check this here. How's your day been? Pretty good. Good, good. So now we're looking to see you are clean for cocaine, amphetamines, methamphetamines, THC, and heroin. So it means you've been in the study for 4 weeks. That means you get 5 drops. Sound good? Yeah, sounds good. Excellent. All right. Okay. Shake our big bucket. All right. Okay, first draw. What do you got? Small. Good job. All right. Nice. Go back in there. What's this? Small. Small. Great. Good job. So we're going to do 2 smalls. Can we get a different color? What's this? Large! Hey! Alrighty. That's the ones I Excellent. like. Good job. So that's 2 smalls and a large. So we'll stand up here Okay. and have you look at our cabinet. Okay. Alright. There we go. Sorry, got a closed door. Oh, hey. And grab yourself 2 smalls and a large prize. Okay, small here? Mm-hmm. Okay. Oh, wow. What a decision. I don't need no mac and cheese, though. Oh, I'll take 2 kids. Oh, what are these? Oh, no. This, the lips. Excellent. I'll take lips. Okay. And you can get another small too. So one more small. Is that a whole cup full of goodies? Oh, they're just 1 each. Just one each. Okay. Oh, well, oops. I'll take the gloves. Great. Can use those this time of year. Okay. And a large? And a large. Is that this shelf? Yep, that's that second shelf. That's that one there. Okay. What is this here? Oh, we'll take this one. Fantastic. Okay. अभी जो हम लोग बात करेंगे वो एक्सटिंक्शन के हवाले से बात करेंगे। वो एक्सटिंक्शन क्या है कि ये भी एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग के है। इसमें जो टाइम आउट है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग अ टाइम आउट अ पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सिचुएशन दैट प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट। मतलब एक ऐसा बिहेवियर जिसे वो लर्न करता है उस एक्चुअली
जो सिचुएशन से उसको रिमूव कर दिया जाता है, कुछ देर के लिए हटा दिया जाता है। और बाय टेकिंग अवे व्हाट द पर्सन फाउंड रिवॉर्डिंग, अनवांटेड बिहेवियर इज इवेंचुअली एक्सटिंग्विश्ड। इसमें यह है कि मतलब एक मिसाल के तौर पे कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो रोता हुआ किसी एक मॉल में आपको नज़र आता है और उसको बार बार कोई चीज़ दी जाती है, तो इससे उसका जो बिहेवियर वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि बार बार रोने से मेरी बात मान ली जाएगी। लेकिन जब उसको बार बार रोने से वो चीज़ नहीं हम लोग देंगे तो इससे वो लर्न कर लेगा कि मेरा ये बिहेवियर जो है वो गलत है। अगर मैं इसको मांग के या उनसे डिस्कशन करके पेरेंट्स से वो चीज़ को हासिल करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगी, तो उसका ये वाला जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द एक्सटिंक्शन। कुछ देर के लिए हम लोग टाइम आउट कर देते हैं ताकि वो लर्न कर लेता है कि मेरा ये बिहेवियर गलत था। इसको भी एक क्लिप से देखने की कोशिश करते हैं। For this video, I asked Ashley and Zach to demonstrate extinction bursts. Also the cat. So an extinction burst is when things get worse before they get better, when we are blocking reinforcement of a problem behavior. And so in this video, I'm going to show you good and bad examples of how to handle extinction bursts. The first example is going to be the bad example. All right, go ahead, guys. Can I please have candy? I'm sorry, no. Please? No. Please? No. Put the beetroot on top? No. A carrot? No. A house? Give me candy! Now! Okay, fine. You can have the candy. Yay! Okay, pause. So in this example, Ashley reinforced the extinction burst as it escalated by giving in and giving him the candy, even though he was acting inappropriate. So now we're going to do it again, and we're going to demonstrate how to respond instead so that you do not reinforce the problem behavior. All right, go ahead, guys. Can I have some candy? No, I'm sorry. Please? No. Please, with the carrot on top. What? I'm falling off the couch. Okay. Please? No. You're a couch potato. Okay, but still no. Pretty, 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 please? No. I'll give you $100. No. 300? No. A gazillion? No. Okay, so we can stop there. So if this were to last for 3 hours, Ashley would still need to stick to her guns and not let him have that until he had done something that she decided was worthy of him earning it, so that he was getting the candy for appropriate behavior instead of the problem behavior. All right, thanks for listening. अब हम लोग बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से मॉडलिंग की। अब इस टेक्निक में भी यही है कि जो सोशल लर्निंग, जो बिहेवियरिज्म में यही कहते हैं कि हम लोग दूसरों से सीख रहे होते हैं, दूसरों के जो उनको देख के हम लोग अपनी वो आदत को अपना लेते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए हम वो जो नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेवियर्स को सिखाया जाता है अपने क्लाइंट को। तो इसमें सिर्फ रीइंफोर्समेंट्स या पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स पे नहीं होता, डिपेंड करता, बल्कि मॉडलिंग अलाउज इंडिविजुअल टू लर्न न्यू स्किल और एक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय वाचिंग समवन एल्स परफॉर्म दोज डिजायर्ड स्किल। तो जो अच्छी आदत हम सिखाना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, वो एक्चुअली हम लोग थ्रू मॉडलिंग उनको सिखाते हैं। जो भी उनका फेवरेट मॉडल या फेवरेट उनकी पर्सनालिटी होती है, उसको जो वो जिस तरह से वो बिहेव करता है या करती है, उसी तरह से इसको लर्न करवाया जाता है। किस तरह से, आइए देखते हैं। Okay, my name's Beth Labonde, and I'm a physical and occupational therapist. And with Kingsley today, I was looking into his executive functions. And the first thing I used is the informal future thinking assessment. And I asked him to look at the picture of Emma and her mother. And I told him a story about them. And then he had to
describe in his mind's eye with nonverbal working memory, can he imagine that future for them? And I'm going to score that, but I think he's going to get a low score because he could not future imagine. So you and I get up in the morning. I say, if it's Wednesday today, then, I have to get up in the morning at 6. I have to get showered and my son breakfast. I have to get in the car. I see myself getting in the car and driving. It's going to take me about 15 minutes to get to work. When I get to work, I have to check my email, my voicemail. I have to plan my day. I have to organize it. I have to plan it. I have to initiate it. I have to get my head around it. I have to plan and prioritize. But really, the big scheme of executive function is future thinking. And he does not have good visual working memory. He's got relatively good verbal. He can say, okay, now I'm gonna go in the kitchen. He's so verbal that he can say, okay, Mom, I'm going in the kitchen. I'm getting myself a glass of water. But he can't sit there and future imagine it. You need both. You need to future imagine it, and then when you're doing it, you self-talk. Did the memory map. So there again, he had to use his visual memory. He had no clue. When it was in front of him, his language skills were wonderful. Oh, look, there's Walgreens, there's high school, he even named it Grand Junction High School. But when it was a blank slate, none of his executive functioning skills. He didn't even try to initiate because it would have thrown him into emotional dysregulation. The third thing I did was a ready, do, done, which is the basis of getting things done. There's 3 steps to each process. You have to start with the future thought in mind. So today, my day-to-day, my future thought was, at the end of the day, I'm going to have it all done and I can sit down and relax. So what do I have to do to get ready? I've got to have all my clothes ready. I've got to have gas in the car. I've got to have the breakfast planned in my head. And what do I got to do? Here's all my steps that I just told. He had difficulty with all 3. I was surprised that he melted down with the ready, do, done because we've done it before. But I think what happened is I made it harder. I made him go get the things, and there were irrelevant things there, but that's flexible thinking. You have to discern relevant from irrelevant all the time, and because he just isn't very flexible and it has to be concrete, he emotionally broke down. And then he told Dad later that time management, which is an executive function skill, was maybe one of his other triggers besides going, this is too overwhelming. राइट अभी जो हम लोग 4th टेक्निक की बात करने जा रहे हैं, दैट इज टोकन इकोनॉमीज। अब टोकन इकोनॉमीज क्या है? ये जो स्ट्रेटजी है ये एक्चुअली रीइंफोर्समेंट के हवाले से है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से, जो मॉडिफाई करती है बिहेवियर को, जिसमें जो ऐसे जो क्लाइंट है हमारे, उनको अलाउ किया जाता है कि वो जो टोकन्स हैं या स्टिकर्स हैं उनको अर्न करें, कि जो भी डिज़ायरेबल हम लोग बिहेवियर उनसे चाह रहे हैं वो जब वो करते हैं परफॉर्म, तो उसकी बेस पे हम लोग उनको कोई टोकन करते हैं, टोकन देते हैं या स्टिकर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जब वो इसको वो पूरे टोकन या स्टिकर्स इकट्ठे कर लेते हैं, तो उसकी बेस पे फिर हम लोग उनको जो उनका जो भी एक पसंदीदा के टॉय होता है या पसंदीदा खाना होता है या पसंदीदा कपड़े होते हैं, वो फिर उनको एंड पे हम लोग देते हैं जब वो डिज़ायरेबल बिहेवियर जो हम लोग चाह रहे हैं उनमें पॉजिटिविटी आना चाहिए, उसको वो परफॉर्म करते हैं। तो बाय द एंड फिर जो भी उनकी डिज़ायर होती है उसके मुताबिक फिर हम उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो लर्न करते हैं कि हम लोगों ने अपना जो बिहेवियर अगर पॉजिटिव रखेंगे तो हमें अपनी जो वांटेड या फिर जो डिज़ायर हमारी चीज़ है खाने की, पहनने की, वो हमें मिलेगी। तो उस हवाले से इसकी एक क्लिप देखते हैं हम लोग मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। All right, thanks, bud. Here we go. Ooh, ooh, says A. Monkey
That's right. Ooh, says a monkey. Fantastic, Ethan. And let's do another one. You brush your... That's right. You brush your teeth. Good job. Here you go, Munchkin. Good. That's okay. Touch your mouth. Touch your mouth. That's your mouth. Touch your mouth. That's your mouth. Okay. That's fine. A bee says, that's right. A bee says buzz. Nice answer. Close your eyes. Yeah, good job, Ethan. I'm fantastic. Closing your eyes. That's okay, buddy. There you go. Do this. Excellent. Doing this. Nice work. You get super wise Wyatt. Next up. Okay. Shrug shoulders. Shrug shoulders. That's shrugging your shoulders. Shrug your shoulders. That's shrugging your shoulders. Much better. Like the tokens, huh? What letter? E. You got it. It's the letter E. Very good. We like the tokens. All right, Munchkin, let's count. 1, 2, 3, 4, and 5. Touch Play-Doh. You got it! Nice going. Touching the Play-Doh. Way to go, Rockstar. There you go. We touched the Play-Doh. Good work, buddy. Let's go in here. Okay, ready? You see with your eye. Excellent work. You see with your eye. Here you go, bud. Excellent. Do this. There you go. Good. Do this. That was better. Much better. What letter? D. You got it. You nailed it. It's the letter D. Yee. All right, one more question, one more token, and we're going to be all done. All done working. What's this? That's right, Ethan. You got it, buddy. It's a book. Excellent work, my rock star. You got all of your tokens. Here we go. You got it, buddy. Fantastic working for your tokens, Ethan. Whee! So what did you want? Okay, good. Thank you for looking and asking. Here you go. It's yours. ओके जी, विद दिस थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग एंड आई होप कि जो हम लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल या मॉडलिंग के ज़रिए से डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, जिससे हम लोग किसी भी अपने क्लाइंट का या अपना जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिज़ायरेबल बिहेवियर, अपनी आदत को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो इसके हवाले से हैं, सो यू कैन चेक ओवर इट एंड डू शेयर विद अदर जो आप समझते हैं कि इस वीडियो से बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से खुश रहिए, खुश रखिए सबको और खुशियाँ बांटते रहिए इसी तरह से। विद दिस मैसेज, थैंक यू सो वेरी मच।